Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can all of you hear me? If so, please let me know on the chat. Okay, jazakallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So, Assalamu alaikum to everybody who is present right now. I hope all of you are doing well. आज जैसे आप लोग को अंदाज़ा होगा कि आज जो है पूरी दुनिया में विमेंस डे के नाम से जो है ये वाला दिन सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिकली सो जस्ट फॉर द रीज़न दैट वी एग्जिस्ट एज अ डिफरेंट जेंडर एज कंपेयर टू मेल्स और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन में एक वुमेन या एक फीमेल को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे या एक स्पेशल तरीके की अटेंशन दी जाती है बिकॉज ऑफ विच टुडे सेलिब्रेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन. वैसे तो एवरी डे इज वुमेन्स डे आई बिलीव. काफी सालों से there is a lot that has happened which has changed the status of a woman. If you look from the Western society's point of view, so even keeping that society in mind, things are very different back then and things are very different now. All of us we exist in the Pakistani society, तो हमारे पाकिस्तानी society में भी बहुत change आया है when it comes to the role of a female. Keeping this in mind, today's session is going to be about an integral part of females' lives, which is now becoming very common. And this is in relation to those females who are currently working. And they could be working in any setup. So it doesn't necessarily need to be a corporate setup. It can be an educational setup. It could be where they're working in a newspaper setup, so on and so forth. So, first of all, I would really like to, thank Bank Islami for giving us the opportunity कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर सकें. और थोड़ा सा मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में भी बता देती हूँ. So basically, I am professionally I am a clinical psychologist. So I've done my MPhil in clinical psychology. I've been practicing since the last 8 years, alhamdulillah. And with that, I've also completed the Dars Nizami Alma program. Commonly उसको आलिमा program कहा जाता है, which is why flyers पे ये आलिमा का word mention होता है, but actually speaking, it's a 6-year degree program in which we study Quran, Hadith, Tafsir, Fiqh, so on and so forth. So, so even professionally, while I am a psychologist, the kind of therapy that I practice is basically I try to integrate both psychology and Islam when it comes to individuals who are coming to us or seeking treatment for us from us for any problem in their life. So इसी इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक भी हमारा जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, और ये उन फीमेल्स के लिए जो करंटली अभी किसी ना किसी प्रोफेशनल फील्ड में, ये उन लड़कियों के लिए भी है जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि अभी तो शायद वो पढ़ रही होंगी पर वो चाहती हैं कि लेटर ऑन इन लाइफ वो कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने तालीम हासिल की है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करें. सो दिस इज रेलेवेंट टू दीज टू पॉपुलेशंस राइट नाउ. आज का सेशन हमारा कुछ इस तरीके का होगा दैट आई ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल एंड उर्दू और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू थिंग्स. तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बैलेंस. विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस. We'll be talking about the element of burnout,
And towards the last 20 to 25 minutes, we'll be talking about ways through which we can try to have a work-life balance in our lives, right? So I hope all of us are on the same page. हम शुरू करें. Please let me know on the chat and then I'll start. ओके ग्रेट जजाकल्ला. हम इसको इस तरीके से करेंगे कि एंड में हम थोड़ा सा टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए. वी हैव 1 आवर, तो बहुत ज्यादा सवालात जो है वो शायद हम केटर नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी हो सकते हैं विल डू दैट टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल, ताकि ये सेशन को आप भी इंजॉय करें एंड ताकि हम इस सेशन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें भी मिल सके इंशाल्लाह. Right. So the first thing, because we're talking about work-life balance, in 3 words में सबसे important word अगर आप मुझसे पूछे, मैं कहूँगी that's the word balance. Because in every element of our lives, in everything that we do in our lives, in everything that we are told to do when we are living life in this dunya, उसका एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो हर जगह आता है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस. क्यों? हमें कहा यह जाता है कि हम ना बहुत ज्यादा खुश हो और ना बहुत ज्यादा उदास हो, राइट? सो समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर सैड, सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ इमोशंस. सिमिलरली कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सो एवरी इंडिविजुअल इज दे हैव गुड क्वालिटीज एंड देन दे हैव बैड क्वालिटीज एज वेल. अगर आप इस दुनिया का स्ट्रक्चर देखें, एंड अभी व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर, तो हमारे सामने एक कुरान की आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरह मुल्क की आयत है ये, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत फर्जिअल बसर हल तरा मिन फुतूर. He who has created the 7 heavens one above another, and you can see no flaw in the creation of the most gracious. Then behold again, can you see any rifts? ये जो कुरान की आयत है, इसमें अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से ये दुनिया क्रिएट हुई हुई है ना, ये दुनिया में कोई फ्लॉ नहीं है. And if you think about it, we can see it with our actual eyes as well. जहाँ पे आसमान है तो वहाँ पे जमीन भी है, जहाँ हमारे पास पानी है वहाँ पे हमारे पास लैंड भी है, जहाँ हमारे पास मेल जेंडर है वहाँ हमारे पास फीमेल जेंडर भी है, जहाँ हमारे पास एडल्ट्स हैं वहाँ हमारे पास बच्चे भी हैं. सो इस दुनिया की क्रिएशन और इस दुनिया को जिस बेसिस पे बनाया गया है, वो बेसिस ही बैलेंस के ऊपर है. एंड वी सी इट ऑल अराउंड अस. And if you focus a little on yourself and if you pay attention a little on your own feelings and your emotions and how you're living your life, आप नोटिस करेंगे आप परेशान उस वक्त होते हैं जब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं मिलता. Either you're too sad, either you're too stressed out, either you're too happy that you may be spending too much, or either you're too much into your friends, either you're too much into your work, or either you're not working at all. So this idea of balance is very much required. al-tawazun के word से हम कहते हैं ना वजन करना, इतना होना कि हम दो चीजों के बीच में जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है दोनों को केटर कर सकें. और इसी से फिर एक और वर्ड निकलता है which is moderation. Now the term moderation जिसको अरबी में कहा जाता है अल-वसातिया, which is कि चीजों को एक मॉडरेट तरीके से लेकर चलना. अब ये सामने तो आपकी मैंने कुरान की आयत शेयर की है, मैंने आपसे अरबिक वर्ड्स यूज किए हैं. In modern psychology, there is a discipline of psychology which goes with the word positive psychology. And will you believe it that now psychologists say that every individual who is living on this earth, which is you, me, people we see on the road, people we meet at work, every individual has 24 strengths within them. इसका मतलब ये जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 24 स्ट्रेंथ्स तो पहले से ही अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली भी हैं. अब साइकोलॉजी इस चीज को एडमिट करती है. अशरफुल मखलूकात का कॉन्सेप्ट है ना,
So this is where we say that out of these 24 strengths, psychologists say one of the strength is temperance. Temperance का मतलब होता है किसी चीज के एक्सेस में नहीं जाना, अपने आप को मॉडरेशन में रखना. And those individuals, those तो word सही नहीं होगा, every individual has the capacity to show temperance in their lives. Whenever we do not use this strength, this is where we end up becoming unsettled. This is where we end up becoming unhappy. तो ये तो थोड़ा सा balance के बारे में था, right? And why we need to seek a balance when we are working in any professional setting. थोड़ा सा अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं. तो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो सबसे पहले आई थिंक अगर मैं इस चीज को, इस वाली स्लाइड को नहीं डिस्कस करूं, तो हमारा आज का सेशन जो है वो शायद मैं आपको थोड़ा एक हाफ बेक पिक्चर दे रही हूँ, या मैं आपको शायद एक इनकम्प्लीट पिक्चर दे रही हूँ आज के टॉपिक से रिलेटेड. तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी लुक एट द इस्लामिक एस्पेक्ट, शुड वुमेन एक्चुअली वर्क, राइट? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. अब इसके कुछ कंडीशंस हैं. तो वो जो एक नोशन था ना कि नहीं इस्लाम में औरतों के लिए जायज नहीं है काम करना, वो नोशन गलत है. इट इज बेस्ड ऑन कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या है? इफ अ वुमन इज वर्किंग, she needs to work in a place where she has limited to no contact with the male gender. तो अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड जगह है वहां पे by all means that girl she can go and work, which is why a lot of females they tend to work in educational settings because वहां पे male interaction या तो न होता ही नहीं है या बहुत limited होता है. Where a woman has to work in any where a woman has to work in any, let's say, other sort of an environment, right? जहाँ पे male interaction भी है, तो वहाँ पे condition ये है कि she has a no male dependent with her. For example, maybe she doesn't have a father, or maybe she doesn't have a husband or a brother who can support her, and financially also she's not strong. So of course she has to look after herself. She has, if she was married, she has to look after her children, or she has to look after her parents. उस केस में गुंजाइश मिलती है, लेकिन उसमें भी she needs to make sure that she is fully clothed, her aura is fully clothed, she is wearing a hijab or niqab, wears no perfume, has limited to no contact with males. अच्छा, अगर कोई एक married woman है, right, and she wishes to work and her husband is there, उस केस में भी अब थोड़े से क्राइटेरिया इस तरह चेंज होते हैं that she needs to take permission from her husband and she needs to make sure that she does not, or the nature of work does not violate any rights of her husband. इन चीजों को यहाँ मेंशन करना जरूरी इसलिए है so that we know what are the parameters or what are the boundaries through which or in which we as females can practice, right? अब ये सब conditions हमारी एक तरफ हो गई. अब हम बात करते हैं about women who are actually working, which are basically those females who are attending the session. आप लोग मुझे बताइए, आप लोग different avenues पे काम कर रहे होंगे, different organizations में काम कर रहे होंगे. In your opinion, do you go through a case of burnout sometime or the other? When I say the word burnout, what I mean is कभी आपके साथ ऐसी कैफियत आती है जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ और मैं बहुत सारी चीजें जगल करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ. आप में से कितने लोग हैं जो इस कैफियत के थ्रू गुजरे हुए हैं या गुजरते हैं? ऐसी कैफियत जब आती है तो ऐसा भी होता है कि आप पूरे दिन काम करके जब घर जाते हैं उस वक्त भी आप परेशान रहते हैं बिकॉज आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप जब अपने वर्क प्लेस में हैं तो आपके बच्चों का सही ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा. घर आते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे फिर आपकी घर की शुरू हो जाती हैं, राइट? So since this is a common phenomenon in female, तो उसकी वजह ये है that a female is juggling a lot of roles at the same time. She could be a wife, a mother, a daughter. You know, she is working at her organization, और वो हर रोल उसको उस फीमेल को
एक तो करना भी है एंड देन एक आई फील एक एक्सपेक्टेशन एक फीमेल से होती भी है कि वो अपने हर रोल को परफेक्टली भी करे. This is the reason why this case of burnout, according to latest research, it's more in women as compared to men. Because when we talk about men, so while they also have a lot of additional responsibilities, for them, their main responsibility is their workplace. Their main responsibility is providing financial sustenance to their family. बर्नआउट आपको कैसे पता चलता है कि आपको हो रहा है? तो बर्नआउट के अंदर आप देखें कुछ तो सिम्टम्स सामने स्लाइड पे मेंशन्ड हैं. आपको शायद कोई मोटिवेशन नहीं होगी काम करने की, नॉट नेसेसरली योर प्रोफेशनल वर्क, बट इट कुड इवन बी घर जाके आपका दिल नहीं चाहता होगा कोई काम करने का, कोई मोटिवेशन फील नहीं होती होगी, या तो बहुत ज्यादा सोते होंगे या बहुत कम सोते होंगे. ये एक और इसका एक सिम्टम है. यू फील एज इफ यूर इमोशनली ओवरवेल्म्ड. आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं आपको बैठे बैठे रोना आ जाता है. आप घर जाते हैं तो आप थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं. आप शायद घर वालों पे जाके थोड़ा कभी कभार नाराज हो जाती होंगी, कभी कभार आप शायद लैश आउट कर जाती होंगी अपने बहन भाइयों के ऊपर. ये क्या है, इमोशनली हम ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपना इमोशंस को हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते. परेशानी बहुत रहती है. ऑफिस में होते हैं तो घर की परेशानी है, घर में होते हैं तो ऑफिस की परेशानी रहती है. और वो एंग्जाइटी ऐसी होती है कि उसको आप पूरी कोशिश करते हैं कि कम कर सकें, लेकिन वो आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि मेरे हाथ से चीजें निकल रही हैं. एग्जॉस्शन एक उसका एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है. इजीली ट्रिगर भी हम हो जाते हैं, और इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि इजीली ट्रिगर हम इस तरीके से होते हैं कि देन वी डोंट टेक क्रिटिसिज्म वेरी openly, right? So, and it also makes sense, right? You're balancing so many roles, you're trying to incorporate so many roles in your life. किसी एक में भी आपको कोई कहता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि खाना शायद सही नहीं बना, या आपके ऑफिस में कहा जाता है आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो हम नोटिस करें कि वो कुछ टाइम से सही नहीं चल रही, तो हम फौरन से परेशान भी होते हैं. कुछ लोग बहुत रिएक्ट भी कर जाते हैं, और एक थॉट पैटर्न में आने लगता है, मैं इतना कुछ करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे शायद उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता. ये सब साइंस हैं बर्नआउट के. बर्नआउट की वजह से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है हमारी लाइफ के ऊपर. सबसे पहले तो ये दैट वी आर ऑलवेज देन इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. हाउ डू यू नो? आप देखेंगे आप इवन आप स्टिल आपसे बैठा नहीं जाता होगा, कभी कभार आपके पैर जो है वो हिल रहे होंगे, कभी कभार आप देख रहे होंगे कि शायद आपके हाथ हिल रहे हैं, कभी कभार आप देख रहे होंगे कि मे बी यूर मूविंग योर फीट अ लॉट. प्लीज लेट मी नो अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है. कभी कभार ऐसा होगा आप कहेंगे आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हुई हुई होती है, आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं. आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको या तो बहुत ठंड लग रही है या आपको बहुत पसीना आ रहा है. दीज आर ऑल साइंस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. बर्नआउट की वजह से और ये भी होता है कि our relationships also become disturbed, because when you're going home तो वहां पे आप ट्रिगर जल्दी हो रहे हैं, जब आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहां पे आप लोगों को इतना ऐसा टाइम नहीं दे पा रहे होते. एंड एक कॉमन चीज जो मैंने नोटिस की है, एंड इट्स नॉट ओनली रिसर्च बट इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एज वेल. बहुत सारी लड़कियां आती हैं हमारे पास फॉर सेशन जो कि काम कर रही होती हैं, और वो अपने करियर में दे माइट बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल. घर में भी दे माइट फील कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, but then they feel as if their life does not have meaning or their life does not have purpose. उनको ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं at the end of the day, हम जा किस तरफ रहे हैं, what is the goal that we want to reach to. So loss of meaning and purpose is also something which ends up happening due to burnout. हमें क्या करना है, हमें इस burnout को resolve and process करना है. अवॉइड का वर्ड मैं इसलिए यूज नहीं करी बिकॉज अवॉइड का मतलब होता है आप एक हद तक किसी चीज को रोक सकते हैं. रिजॉल्व एंड प्रोसेस करने का मतलब ये होता है हमें इसके वी नीड टू वर्क आउट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस बर्नआउट, राइट? एंड दिस इज वेयर द एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस कम्स इन. क्यों जरूरत क्या है बैलेंस की? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस वर्क विद आवर लाइफ? बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस. कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन कर दिए.
This leads to increased life satisfaction. You have better mental and physical health. Work stress आपका कम हो जाता है. You're able to manage your priorities. You have more control over your, no, I would say not only your work life, but your personal life as well. And you have better relationships at the same time. तो अगर आप ये आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपने ये अहद कर लिया है कि नहीं मुझे वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है, so that means that you have reached to this point where you realize the benefits of having an equilibrium, of having this moderation in your life. अब कैसे मिलेगी हमें ये? अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. Because we were talking about the Islamic perspective as well, so I thought we could also include a few examples of females who, or prominent women in Islam, who did play a big role when it came to decision making, when it came to working or business or so on and so forth. दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं. हज़रत खदीजा के बारे में हम जानते भी हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हज़रत खदीजा थी, and she was through and through a businesswoman. I don't know how many of you know this, but she basically inherited her business from her father. Then when she got married to her first husband, so her first husband and she herself, they were looking after the business. Then her first husband passed away, and then ये खुद अपना बिजनेस देखती थी. बट इनका बिजनेस को चलाने का या रन करने का तरीका ये था that she would fulfill all the conditions जो हमने पहले इस पे बात की है. So she had a slave, and that slave would be responsible for doing a lot of work. So she delegated a lot of work to him. And वो हज़रत खदीजा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ही ऐसी हुई because it was business related. Then we have Hazrat Salama. Hazrat Salama एक सहाबिया रही हैं. She was also the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सुलह हुदैबिया के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना था. उसकी डिटेल में तो मैं अभी नहीं जा रही due to limited time, but by all means please do go and read upon it. तो उसकी डिटेल्स तो उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन थी जो कि हजरत उम्मे सलमा ने ली थी. उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर की थी और वही डिसीजन जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट किया था. तो यहाँ से मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स डाले, बट वी कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द सहाबियात who have played a very important role when it has come to taking responsibility for those things which are thought to be more male oriented or male dominating. आगे बढ़ते हैं हम. जो हमारा आज के सेशन का मेन पॉइंट है कि हम बैलेंस कैसे अचीव करें. राइट, we'll be talking about 5 steps through which we can achieve more of a balance when it comes to work and when it comes to our professional life. तो जो लोग आज के सेशन अटेंड कर रहे हैं उसमें आई एम अज्यूमिंग बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी who are single, who live with their parents. There might be a lot of females who are married and who have their spouse and who have children. So we have a variety of different women who are attending this session today. कोशिश ये है कि आप लोग को इस तरीके की tips या interventions मिल सकें which are a benefit to everyone, inshallah. सबसे पहली चीज, and the first step which we need to do when we talk about work-life balance is to start by stopping. So I'll repeat this again. सबसे पहली चीज हमने ये करनी है कि we need to start by stopping. Now this is a very paradoxical statement, right? शुरू भी करना है लेकिन अपने आप को रोकना भी है. इसका मतलब ये है that सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब भी हम अपना काम शुरू कर रहे हों, जब भी हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस में एक अहद कर रहे हो कि हमें इसको क्रिएट करना है, जब भी हम ऑफिस जा रहे हो या वर्क प्लेस पे जा रहे हो, थोड़ा सा वक्त निकाल के इन द मॉर्निंग जस्ट बिफोर यू लीविंग फॉर वर्क आप ये सोचें कि मेरी नीयत क्या है. What is my intention because of which I'm leaving my house and I'm going for work? So we have, a lot of different professions. So we have
females who are doctors, we have females who are teachers, we have females who are managers, we have females who are psychologists, or who are speech therapists, so on and so forth, right? A lot of different professions. सबसे पहले you renew your intention in the morning. मैं intention किस लिए बात कर रही हूँ? क्योंकि अगर आपकी नीयत के अंदर ये बात शामिल है कि आज आप अपने वर्क प्लेस पे इसलिए जा रही हैं क्योंकि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल फायदा अपने आप को या दूसरों लोगों को देने जा रही हैं, दैट मीन्स आपका पूरा दिन ऐसे गुजरेगा जैसे आपने उस पूरे दिन को इबादत में गुजारा है. When our intention is right, so then whatever work we are doing, we are also getting sawab for it. वो सबसे इम्पोर्टेंट हदीस जो हम पढ़ते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, that actions are judged by intentions. So you first check your intention. आप सुबह जब जाते हैं, आप क्यों जा रही हैं? आप इसलिए जा रही हैं because you want a way out from your home? It's because you want to earn a lot of money? Is it because you want to gain a lot of respect? या आपकी तीनों intentions ठीक नहीं? आपकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई ना कोई इंटेंशन आपकी जो है लोगों को फायदा पहुंचा रही हो, जिसमें आप अल्लाह ताला की किसी ना किसी तरीके से इबादत कर रहे हो. एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ. बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने डॉक्टर बन रही हैं, लेकिन डॉक्टर क्यों बन रही हैं? इसलिए बन रही हैं ताकि क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर बहू की तलाश है, या ये वजह है, या इसलिए डॉक्टर बन रही हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे इस्लामिक कल्चर में या सेटअप्स में बहुत कम फीमेल डॉक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारी फीमेल्स हैं उनको मेल डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है. तो अगर उनकी नीयत ये है दैट आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू बी दैट डॉक्टर who can cater to females and who can not only give them medical advice but also give them spiritual advice as well, then आपकी नीयत ठीक है. So the first thing is renewing your intention. आपकी intention कुछ भी हो सकती है, but it needs to benefit इस्लाम इन सच वे. ऐसी नियत हो ना कि आप क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने जाके कह सकें कि अल्लाह ताला मैंने ये काम किया था क्योंकि मैं ये इसमें मैं ये चाह रही थी कि मैं जो हूँ लोगों को दीन का पैगाम दूं. मैं ये चाह रही थी कि मैं वहां पे जाके दावा कर सकूं. मैं ये चाह रही थी कि लोग मुझे देख के ये दीन के करीब आ सकें, so on and so forth. So the first thing is intention, right? लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप सुबह सुबह काम के लिए निकल रही होती हैं, क्या आप लोग अपनी इंटेंशन हर रोज रिन्यू कर पाती हैं? आर यू एबल टू डू इट एवरी डे? हम नहीं कर पाते. उसकी वजह ये क्योंकि हम इतनी जल्दी में निकल रहे होते हैं. हम सुबह भी कोई ना कोई काम करके निकल रहे होते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता. सो वी स्टार्ट ऑफ विथ रिन्यूइंग आवर इंटेंशन. हाँ, ये एक चीज है. हमें ऐसा लगता है ये तो हमारे माइंड में ऑलरेडी डिसाइडेड है. बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कभी कभार हमारे माइंड में वो डिसाइडेड होता है, लेकिन समटाइम्स इट टेक्स द बैक सीट एंड वी टेंड टू फॉरगेट व्हाई वी आर एक्चुअली वर्किंग. तो अगर तो आपके माइंड में फोर फ्रंट पे है, देन बाय ऑल मीन्स यूर ऑन द राइट ट्रैक. बट अगर ऐसा है कि वो चीज आपको शायद माइंड में कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड है, शायद अच्छा होगा अगर आप हर रोज उसको रिन्यू कर लें. दूसरी चीज आती है प्रायोरिटाइजेशन. नाउ वी सी कि ओके, व्हाट इफ आई एम अ फीमेल, सो व्हाट आर माय प्रायोरिटीज इन लाइट ऑफ इस्लाम, राइट? सो जैसे कि हमने इंटेंशन की बात की, तो इंटेंशन में हमने उसको लिंक किया. आप देखिए यहाँ पे कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, and I did not create the jinn except to worship. हमारे अगर ये कि अल्लाह ताला मैं इस काम से हमारी इबादत का
तरीका भी बन जाएगा इंशाल्लाह. Husband, right? And husband. जी, can you hear me now? आवाज बेहतर हुई? Okay, so I'll continue. So we're talking about priority of a female, right? Priority female की सबसे पहली जो है, if she's married, is basically her husband. Financial or financial support or providing for her family financially, that's not her priority. Honestly speaking, that's not even her responsibility. That's not even part of her job. एक फीमेल का घर को चलाना ये उनके उनके उनसे ये कहा नहीं गया है. That's not something that she's responsible for. That's the responsibility of the husband or the male, right? So what's the priority of the female? The priority of the female is that she has to look after her husband. She has to be dutiful to her husband. अपने husband का ख्याल करना, husband की बात सुनना, right? So that's her priority, which means कि when she is going for work, और अगर बहुत जरूरत है and she is going for work, वहां पे अपने आप को थोड़ा ये याद दिलाना कि जिस काम के लिए मैं अभी जा रही हूँ वो मेरी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है. That's maybe another priority for myself, but my number one priority is my husband. So I need to make sure that the work that I'm doing वो कहीं ना कहीं उनकी rights वहां पे जो है वो नहीं forego रही हूँ. What about for a girl who is not married, right? She doesn't have a husband, but even for her, her priority is her parents. तो आप देखिए ना यहाँ पे इतनी सारी कुरान की आयतें यहाँ पे मेंशन हुई भी हैं जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे पेरेंट्स के लिए what are the things that we need to do. So there is ihsan, there is financial support, there is bequest, praying for their forgiveness, humility, being grateful for them, company with kindness, Allah Ta'ala ki rahmat ki dua karna, words of respect. We can't reproach or rebuke them, no words of disrespect, no arrogance, so on and so forth. Then हमारी parents की, that's why the parents are important, right? So इसका मतलब है कि number one priority of a female if she is married is her husband and her children, right? And if she's not married, it's basically her parents. So if you need to be able to work, you need to also remind yourself in the morning कि मैं आज जा रही हूँ, लेकिन मेरे ये जो जिस जगह पे मैं जा रही हूँ वो मेरी second priority, मेरी first priority, मेरी effect नहीं होनी चाहिए, right? अगर आप ये last वाली picture देखें, so women have rights over the husband as regards to living expenses similar to those of their husbands over them as regards of obedience and respect. So the financial part or living expenses ka part jo hai, that is the responsibility. That is the responsibility of the male, and the female's responsibility is to be dutiful towards her husband. जब इन priorities को हम थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं, where you start your balance by stopping, तो आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि मेरी number 1, number 2, number 3 priorities कौन सी है. Now I need to plan and prep accordingly. Right? So you have to go to work, right? वो आपकी शायद number 1 priority नहीं है, लेकिन जाना तो है, जो भी आपके XYZ reasons हैं. अब वहां पे जाते हुए, how can we make sure that we stick to our priorities as well? सबसे पहली चीज तो ये है कि our priority towards religion. मैं ये काफी दफे सुनती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां बताती हैं that when they are working, तो वो कहती है हमने एक चीज हम अपने अंदर नोटिस करते हैं, और वो ये कि हम नमाजें हमारी ना बहुत हरिडली पढ़ी जाती हैं, या हम बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, या कुछ कहती हैं कि हमारी नमाजें जो हैं वो छूट जाती हैं बिकॉज वी आर सो बिजी इन वर्क. तो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखा हुआ. और बैलेंस में ये होगा कि यू रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं, ओके व्हाटएवर हैपेंस, नमाज का वक्त हो गया, आई फर्स्ट नीड टू गो एंड आई फर्स्ट नीड टू प्रे ऑन टाइम. एक ये तरीका है जिसमें आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपने आप को अपनी एक बाउंड्री कैसे क्रिएट करते हैं. वी टॉक अबाउट relationships, right? Whether they're husband, children, or parents.
ऑफ कोर्स इफ यूर गॉन फ्रॉम 9 to 5 इन द डे, आप उस वो वाला टाइम उनको नहीं दे सकते. हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये दैट यू मेक श्योर, और मैं आपको एक ये बहुत प्रैक्टिकल टिप और बहुत आजमाई हुई टिप बता रही हूँ कि यू मेक श्योर दैट इन द होल डे यू एंड अप कॉलिंग देम एटलीस्ट वंस. चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो. अच्छा, मोस्टली हस्बैंड्स के केस में फिर भी ये होता है कि शायद कॉल कर लेते हैं, लेकिन शायद पेरेंट्स को नहीं कर पाते कॉल. तो कॉलिंग देम अप वंस इन द डे, इवन दो यू मे हैव मेट देम इन द मॉर्निंग, आपको पता है आपने शाम में उनके पास जाना है, बट जस्ट यू नो कीपिंग अ चेक ऑन देम एंड ऑफ कोर्स द किड्स एज वेल. एक और चीज ये भी की जा सकती है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, तो आपने घर भी देखना होता है. घर में आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं विच आर रिलेटेड टू द किचन एंड ग्रोसरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस बात को इस्टेब्लिश कर लें कि आप वो वाले काम फिजिकली जाके हर वक्त नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा. सो गो फॉर ऑल्टरनेटिव्स, लुक फॉर ऑनलाइन ऑप्शंस. ऑनलाइन ऑप्शंस, यस, समटाइम्स ऐसा है कि वो शायद आपको फॉरेन डिलीवर नहीं कर पाए. हो सकता है कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस में, ऑफ कोर्स बात तो ये है कि आप फिजिकली अपनी ग्रोसरी नहीं देख के ले सकते, बट यू बी ओके विद दोस, राइट? एंड यू टेल योरसेल्फ एट दैट टाइम कि मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि मुझे अपना ये काम मेरा ये हो जाना चाहिए, सो आई कांट फिजिकली गो एवरी डे, so you look for an online option. Then a lot of females, what they do is that in their lunch break, they are sometimes working or they are maybe not able to give time to themselves. So you make sure that you take a proper lunch break as well, right? ये कैसे होगा? आपको पहले से प्लान आउट करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि आज के दिन मुझे अगर ये चीजें करनी है तो मैं उसको किस तरीके से प्लान आउट करूं, so that I know that I get a proper lunch break in the middle. वो लंच ब्रेक में आपने नमाज भी पढ़नी है, आप बाय ऑल मीन्स आप नमाज पढ़ें. आपने कॉल करना है, आपने कॉल किया, आपने 5-10 मिनट वहां बात कर ली, आपने अपना प्रॉपर लंच किया, एंड देन यू कम बैक टू योर वर्क. बहुत इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जिसमें दे विल, और या आप लोग के साथ होते भी होंगे, where there is basically an overlap of work and family. आपके बच्चों का स्पोर्ट्स डे, वो आपने सुबह वहां पे जाना है, but you have work as well. Or there is a very important family lunch which is happening and you can't go because you need to be at work. या ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें आपको you need to be able to do some work, but of course आप उस वक्त घर पे नहीं है, you are at your workplace. और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर पे हैं और आपके ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ जाता है. ये वाली सिचुएशन, सबसे पहले हम अपने आप को ये कहते हैं कि इट्स okay and we accept the fact that these situations will come up in our lives. As females, what we tend to do is we tend to put all of our efforts in making sure कि कोई ऐसी situation ना आए जिसके अंदर मेरी work और family life दोनों overlap हो जाए, या जहाँ पे मुझे दोनों में से किसी एक को compromise करना पड़े. लेकिन इसको बड़ी रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जिसमें ये दोनों कोलाइड करेंगे. This is where we delegate, which means you give the work to another person, or you ask for help, or you again keep a check कि मेरी अगर प्रायोरिटी अभी क्या है. So I need to be there for my children, I will need to go late to work. थोड़ा सा इसको आपको, like I said, you will need to plan and prep from before. इस पूरे प्लानिंग एंड प्रेपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने भूलनी नहीं है, और वो ये है कि आपने अल्लाह ताला से कांस्टेंट दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला आप मेरे वक्त में बरकत डाल दें, कि अल्लाह ताला आप मेरे वक्त में मेरे वक्त इस तरीके का कर दें कि मैं अपनी जितने हद तक मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं उसको पूरा कर सकूं. सो दुआ इज समथिंग व्हिच स्टेज अ कांस्टेंट. द थर्ड थिंग इज वर्कआउट. Now you might be wondering कि हम प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, हम इंटेंशन की बात कर रहे थे, हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो हाउ कम वर्कआउट इसके बीच में आ गया है? उसकी वजह ये है कि हमने बर्नआउट की बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट? अगर मैं थोड़ा सा इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको बताऊं, दैट वर्किंग आउट और एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ. इसका रीजन बहुत सिंपल है. वो रीजन ये है कि जब हम परेशान होते हैं
या जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम एंजाइटी में होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेस एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो एनर्जी इस तरीके की है कि मे बी योर ओवर थिंकिंग, मे बी योर मे बी क्राइंग टू मच, मे बी योर गेटिंग एंग्री अलॉट, मे बी योर गेटिंग ट्रिगर्ड इजिली। ये सब क्या है? एक्सेस है ना हमारे रिएक्शंस के अंदर। तो ये क्या है? देयर इज एक्सेस एनर्जी इन योर बॉडी and it's coming out in unhealthy ways, like screaming, like crying a lot, like having a racing heartbeat most of the time, so on and so forth. When we work out and when we make workout a regular pattern in our routine, this is where that excess energy of stress or anxiety or frustration or anger, it tends to come out in more healthier ways. तो इसलिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही वाली बात है कि वर्कआउट के लिए कैसे टाइम निकालें, राइट? ये तो एक एडिशनल चीज हो जाएगी जो कि आपको करनी पड़ेगी। सो मेकिंग इट वेरी सिंपल, ट्राई टू वर्कआउट एट वर्क। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे organizations have understood the idea of how much workout is important, so they provide gym and other such facilities in the workplace. पर अगर वो नहीं भी है, doing something simple as maybe climbing the stairs or something simple as indulging in stretching exercises. कैसी stretching exercises हैं जो कि आप अपनी सीट पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, just to maintain your posture. These are things which can also be added in your routine. It doesn't take that much time. It doesn't require that much effort, but what it does require is consistency, right? एक और चीज जब हम वर्कआउट के बारे में कहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अबाउट डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग अगर आपके सामने देखें, एक आप लोग के लिए एक पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन है हाउ टू डीप ब्रीथ। हाउ यू डू दिस इज दैट देयर इज दिस स्टार शेप्ड फिगर जहां ब्रीद इन लिखा है, कहीं से भी आप शुरू कर लें। आपने करना ही नहीं ये है, यू हैव टू टेक योर फिंगर एट द वेरी स्टार्ट और वेयर इट्स रिटन ब्रीद इन, वहां की लाइन के सबसे शुरू में अपनी फिंगर रखनी है आपने, एंड आपने इनहेल करना है थ्रू योर नोज। So you inhale and then you hold, and then जहां breathe out लिखा हुआ है, जहां जहां उसकी लाइन शुरू हो रही है, वहां से then you exhale through your mouth. Inhale, hold and exhale. बहुत दफा लोग कहते हैं कि हम ब्रीथ तो करते हैं, breathing is a normal pattern of our lives, and without breathing how can we be alive? So we're not talking about breathing. I'm saying focus on deep breathing. हमारी breathing generally जो है वो बहुत shallow होती है। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये है आपने सांस अंदर ली अपनी नाक से, 5 सेकंड तक आपने उसको होल्ड किया एंड देन आपने उसको रिलीज किया। अब सवाल ये आता है कि व्हाट्स इसका क्या फायदा, इससे क्या हो जाएगा, राइट? ब्रीदिंग से क्या फायदा हो जाएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। ब्रीद इन ब्रीद आउट अगर मैं कर भी लूं, उसकी वजह से कोई मेरे अगर आज मेरी मेड ने छुट्टी कर ली, वो तो नहीं आ जाएगी, राइट? एंड मैं बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड इफ somebody is thinking along those lines. So I'll tell you the scientific reason for it. When we indulge in deep breathing, right, what happens is कि हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, right? And when we are deep breathing, that oxygen gets a chance to reach to our brain. But now food for brain is basically oxygen. So the brain requires as much oxygen as possible, right? जब आपने लंबी सांस ली और आपने उसको breathe in किया and the oxygen goes to your brain, it causes the brain to function at an optimal level, which means your work performance will get better. You'll be able to be more focused. You'll be able to be more attentive. You'll be able to have more control over stress. You'll be able to relax yourself. All of these are benefits of deep breathing. So जब आप ऑक्सीजन ज्यादा अपनी अंदर ले रहे हैं, it is basically causing your brain to become more energized. And when you're releasing carbon dioxide, it's causing that excess unhealthy, element
to release from your body. तो इसको जरूर आप जो है कोशिश करें कि anytime during work when you're feeling stressed or at home, make more use of deep breathing exercises. Right? Are all of us on the same page? ठीक है, आगे बढ़े. Okay, so then the fourth thing that we can do for ourselves, which if you ask me is a very important thing that very few females apply to themselves, is helping yourself. We're so busy trying to be the perfect mom, the perfect wife, the perfect daughter, the perfect employee, the perfect teacher, the perfect manager, the perfect doctor, so on and so forth, that we give a lot back to others, but we don't focus on ourselves. अपने आप पे अब थोड़ा हम फोकस करने की बात करते हैं कि अपने आप के पे कैसे फोकस होता है, right? या how do we help ourselves? The first thing is you understand what are your rights at work. कितना काम है जो कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है और कितना काम है जो कि नहीं है. अब आई नो एक क्वेश्चन आता है कि जो शायद कुछ काम ऐसे भी हमें करने पड़ते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होते, बट हमें करने इसलिए पड़ते हैं बिकॉज इफ यू डोंट डू इट देन इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, हमारी प्रमोशन इफेक्ट होंगे, या हमारी मे बी शायद हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारे फीडबैक पे इफेक्ट आ सकता है. आई गेट इट, ऐसा है. लेकिन फिर आप वापस अपने उस पे जाते हैं ना कि प्रायोरिटी क्या है. तो आप प्रायोरिटी पे जब जाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, I need to limit my work, do what I've signed up for, not do the extra work. Why? Because my priority is I don't want कि मेरी extra काम लेने की वजह से मेरे relationships disturb हो जाए. तो हो सकता है कि आपकी promotion आपको नहीं मिल पाए, हो सकता है आपका feedback शायद बहुत अच्छा नहीं हो सकता है कि शायद आपको उस तरीके का praise नहीं मिले. But at least at the end of the day, you will be having more balance in your life as compared to that individual who may have gotten a promotion, who may have gotten a very good feedback, but coming with an expense of having their relationships disturbed, right? So being very realistic here. आपको अपने आप को ये उस वक्त देखना होता है at my workplace what are my rights. मैं कहीं over indulge तो नहीं कर रही हूँ यहाँ. And then when you feel that the expectations and demands of the workplace are too much, then we need to speak up for it. You're not speaking up because of other people. You're speaking up because you're helping yourself. Another thing is being able to work smart, not long. वैसे तो मोस्टली फीमेल्स ओवर टाइम नहीं करती और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि फीमेल्स डू लीव ऑन टाइम, बट इफ यू आर वन ऑफ दोज हु टेंड्स टू वर्क ओवर टाइम, then maybe this one is for you. That understand how you can work in a way that you can take things in stride and not have to sit for long, right? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ये सब करते हैं और या हमारे वर्क प्लेस में ये करना मुश्किल है, या हमारे एक अंडरलाइंग एक हमारी इमेज होती है वो उसमें इफेक्ट आ जाएगा, then I think a good idea would be to look for more friendly alternatives. इससे तो फिर ये बात हमें समझ आ रही है that the workplace that you are currently in, they're not maybe that supportive. So look for more friendly alternatives. थोड़ा सा friendly alternatives में थोड़ा बात करना चाहूँगी, and then we'll end the session. अभी का जो हमारा करंट टाइम पीरियड गुजर रहा है उसमें आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि एक शिफ्ट आ गया है वर्क प्लेस में, और वो शिफ्ट इस तरीके का है कि नाउ वी हैव बिकम मोर ओपन टू द आइडिया ऑफ वर्क फ्रॉम होम, राइट? वर्क फ्रॉम होम तो है ही एक चीज. दूसरा ये फीमेल्स के लिए भी इन द लास्ट 5 to 6 years a lot of opportunities have opened up where a lot of girls are doing businesses from their homes. स्मॉल बिजनेसेस हैं, कुछ लोग के वो स्मॉल बड़े बिजनेसेस बन गए, बट they are working from home and they're working in such a way that they're prospering as well. वो वाला टाइम था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें औरतें काम करती थी लेकिन वो अपने घर में रह के काम करती थी. मुझे ऐसा फील होता है अब हमारे पास वापस वो वाली अपॉर्चुनिटी आई है that a girl can be financially independent without having to
maybe work for a 9 to 5 job. Yes, but I will agree that it will take effort. एंड कभी कभार शायद ये भी होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अगर मैं कोई ऑनलाइन काम करना भी चाहूँ तो मैं कौन सा करूँ. आई कांट कम अप विद आइडियाज. मैं इसको किस तरीके से करना चाहिए. तो इसको जरूर इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर जरूर करिएगा. That is there anything that can be done with regards to finding a friendly alternative for yourself. जहाँ पे ये बात आती है कि if a female is working online then she can't earn as much as maybe she can if she goes to work somewhere. ये एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी misconception है. You can earn very well, you can be very much financially settled even if you're working from home. It just depends on your hard work, your effort, and how much time you are able to put into the kind of work that you are doing, right? तो थोड़ा सा ये था कि आप अपने लिए फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह. And then the last thing or the last tip which I can give to you is basically realizing that even if you achieve work life balance तो याद ये रखिएगा कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफा वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर लिया तो बस अब आपकी जिंदगी सेट है and now you're good to go and now you won't have any other problem and you've achieved that. No, this is a cycle. So you'll maybe at some point you'll achieve work-life balance and then after some time you'll see you're going back to your old trends. What do? You go back to those 5 points that we've talked about today. Renew intention, prioritize, plan and prep, work out and help yourself. So understand that work-life balance is a constant cycle. It's not a point that you reach to, but a point from where you may start and stop at any time during your lives. ठीक है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. थोड़ा सा बैलेंस के बारे में आपके लिए. कभी कभार ऐसा ही होता है ना कि बहुत ज्यादा काम और बहुत आपको लगता है इतना हैवी हमारे ऊपर वर्क लोड आया हुआ है, घर से भी लोड आया हुआ है, उसमें भी हमें कैसे बैलेंस करना है. बैलेंस तो हो सकता है इंशाल्लाह, but yes, it will require you to at least follow these 5 points that we've discussed today consistently and while making dua the whole time. Right? So dua is the crux of any action that you do. Jazakumullah khair. So we'll take a couple of questions and then we'll end inshallah. So आपके जो भी question है, please write on the chat and then हम उसको देखते हैं. How can we balance homeschooling, studying, working together, or is it too much on the plate? So you've talked about homeschooling, right? Homeschooling in itself requires a lot of time and effort. और homeschooling के लिए ज़रूरी है कि you need to be present for your children at that time. Plus, if you're studying as well, so that means कि आपका time वैसे ही कम हो जाएगा. If you're homeschooling and studying, I would suggest maybe look for more of something which is more of work that can be done on a part-time basis, right? Because full-time work, homeschooling, studying, that will be too much on your plate. Yes. Could be, yes, working online भी हो सकता है, or even if you're working online but आपकी वो जो है full time काम है तो उसको home schooling के साथ जो है वो करना मुश्किल हो जाता है. So it's all about looking at what your priority is
तो होम स्कूलिंग एक एडिशनल आपने एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच डज रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, तो उसको आपको जो है थोड़ा केटर करना पड़ेगा. So how to balance deen and dunya? I think that's a very general question. Is it pertinent to today's session या आप लोग generally पूछ रहे हैं? क्योंकि तो बहुत vast topic है ये, and it has a lot of different aspects to it as well. But अगर मैं जनरली आपको बता सकूं, देखें हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया ये भी एक कांस्टेंट साइकिल है. हम कभी कभार जो है इस ये साइकिल भी हमारा जो है वो अनसेटल हो जाता है, राइट? तो हमें वापस अपने आप को उस बैलेंस पर लेकर आना होता है. सबसे पहली चीज इसमें यही है दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आपके लिए राइट नाउ क्या चीजें जरूरी हैं, आपको इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया है. तो दैट्स द नंबर वन थिंग, राइट? तो हमें इस दुनिया में इस मकसद के लिए भेजा गया है कि अल्लाह ताला ने कहा है हमसे दैट वी हैव टू ओबे हिम. So when we know that we have to obey him, then we look at different ways through which, मतलब हमारा गोल हमें पता है. Every individual on this earth has to obey अल्लाह ताला. अब जब हम अल्लाह ताला को ओबे किन तरीकों से करते हैं? दो तरीके. एक वो फंडामेंटल है जो कि हमें दीन में बताए हुए हैं, which is of course 5 pillars of Islam है, आपके नमाज है, right, zakat, so on and so forth. Those are the fundamentals that we have to do. And then every individual also has a different way of making Allah Ta'ala राजी with us. वो क्या है? आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो मैं आपको सेशन में भी दे रही थी. एक डॉक्टर है, वो कहती है कि नहीं मैं डॉक्टर इसलिए बन रही हूँ बिकॉज आई वांट टू बी एबल टू provide religious counseling to my patients as well. Now that is her way of trying to make Allah Ta'ala राजी with it. तो अपना एक इंडिविजुअल तरीका भी आप ढूंढते हैं और कुछ फंडामेंटल्स तो हमें दीन में ऑलरेडी पता है. This is the way through which we can try to basically balance out deen and dunya. बहुत ही मैंने आपको simplistic इसका भी जवाब दिया है because it's such a it's more pertinent to separate topics और वहाँ कैसे हो सकता है. Just taking one last question and then we'll end the session. How to deal with being a perfectionist, because I feel like expecting ourselves to be the best in everything we do makes everything harder. You're 100% right. We can't be perfect, and we can't be perfect in so many of our roles. No, not one individual on this earth is perfect. Perfect हमारे पास जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की personality, and that's only and only him. As females, we tend to fall into this trap where we feel we need to be perfect in all of our relationships. तो हमने अपने आप के ऊपर एक added stress डाला हुआ है, and that stress is unrealistic. इस चीज को समझना जरूरी है. We are on the lookout for perfectionism, which A doesn't exist, B is unattainable. So we've fallen into that trap. A better word for us to use is what's the how good enough can I be, right? या मैं कितना effort दे सकती हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि कितनी capacity है मेरे अंदर in order to do things. That's all, right? So you this में ना थोड़ी आपकी mental counseling आती है, where you need to keep on reminding yourself that you're looking for perfectionism which doesn't exist. ठीक है. So I think we'll just end the session because हमारा time भी पूरा हो गया. Jazakallah for the feedback. If because a few of you have questions, अगर कोई आपका बहुत important question है तो आप लोग जो है group पे or let me check इसके लिए क्या हो सकता है, right? Because right now we'll just end the session inshallah. So Jazakumullah khair. I hope today's session was beneficial to everyone, and दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.